हेलो। हाँ तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ कुछ पॉइंट्स को लेके जो इम्पोर्टेंट होंगे, लाइक बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव। तो दो तीन चार पॉइंट ध्यान में रखना आप। जैसे सबसे पहला तो पॉइंट होता है क्लैरिटी। कि जैसे मान लो हम जब कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी इंटरव्यूअर हमसे कुछ भी पूछ रहा है, राइट? तो उस चीज के बारे में हमें कितनी ज्यादा क्लैरिटी है वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है वहां पे। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये मान लो कि इंटरव्यूअर ने आके आपसे पूछा कि कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? तो उस फेज में मतलब जो हमें इंट्रोडक्शन भी रखना है वो इतना ज्यादा लेंदी नहीं रखना है, और उसको ऐसा रखना है कि सामने वाले को एकदम से क्लियर समझ में आ जाए। जिससे मैं एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल कि माई सेल्फ इज सौरभ कुमार, ठीक है। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस ट्रिपल आई टी ग्वालियर, राइट? एंड लाइक कुछ आप अपना पॉइंट बोल सकते हो कि राइट, जैसे मैं अपने केस में बोल देता हूँ कि आई हैव गॉट सेकेंड रैंक इन द बैच ऑफ 123 स्टूडेंट्स। देन आफ्टर दैट immediately I jump on कि currently I am working with Disney Plus Hotstar, and here I am working with playback engineering team, which actually takes care about like the streaming live events in order to provide the playback URL corresponding to user details. So let's suppose if you are a subscribed user, then like we have to serve 4K FHD URLs. If suppose you are free or guest user, in that case, like we have to check like whether we have to serve like the free timer for these users or not, or like we have to just saw like the paywall page, means like you can just buy a subscription to watch the content. I think that's राइट। इसको मैं मतलब पूरा समराइज करूं तो इसमें आप देखो ना, क्लियरिटी है एकदम से कि मतलब मुझे जो बोलना है सामने वाला विल एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज कैसे इसको पूरा समराइज करूं अगर इंट्रोडक्शन को। तो माई सेल्फ इज सौरभ कुमार। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ट्रिपल आई टी ग्वालियर। I have achieved second rank in the batch of 123 students. Currently, I am working with Disney Plus Hotstar with playback engineering team, which actually takes care about streaming related stuffs. So you can think of based on the user details. Basically, my team is providing like the different playback URL. So you can think of suppose in case of paid users, right? We have to provide 4K and FHD URLs. But in case of free and guest user, we have to decide whether like they fall under the free timer bucket or not. If yes, we will provide the free timer to them. Otherwise, we will show like the paywall page to them and ask for the subscription to buy in order to watch the content. I think that's it. So that this is the first thing, the clarity. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि हमें लाइक परफेक्ट इंग्लिश बोलना है या लाइक वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट वॉट एवर वी आर सेइंग, राइट? तो आई थिंक परफेक्ट इंग्लिश तो आई डोंट थिंक कोई बोलता है अभी, बट वी हैव टू कॉन्फिडेंस मोर इनफ। कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, और जो कम्युनिकेशन में बेसिकली स्पीड होना चाहिए। जैसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमें लगता है काफी स्पीड से बोले, नहीं, बहुत ही रिलैक्स होके छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलना चाहिए विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो इंटरव्यूअर कुछ भी पूछता है, एंड सपोज मान लो उसने पूछा कि अच्छा ठीक है, सो यू आर वर्किंग हियर, डू यू वांट टू tell me about like the technologies that you are using here, so how you will express, right? तो उसमें बोलो कि yes, okay, so here like I am working with this team, so there mostly I have worked upon on these tech stacks,
and I am like learning with these new kind of things. Recently I have worked upon on these items of projects, right? तो दीज आर लाइक मतलब बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं। बड़े बड़े सेंटेंसेस पे मत जाओ, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस पे जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और बीच में जो एक बेसिकली कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो जो आपके लिए फेवरेबल हो, जैसे आई एम यूजिंग लाइक, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, उस टर्म में आपको सोचने का समझने का टाइम मिल जाता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। आई कांटेक्ट, सामने बिल्कुल एकदम से देखना, वो मैं अभी बोलूंगा लाइक थर्ड पॉइंट में। तो बट द कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इन द सेंस, जब भी कोई कुछ बोल रहा है हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलना है और विद फुल कॉन्फिडेंस बोलना है, सो दैट सामने वाले को लगे कि यार हाँ मतलब आई थिंक लाइक शी और ही इज अवेयर अबाउट द थिंग्स, दैट्स व्हाई लाइक ही इज और शी इज इन कॉन्फिडेंस, राइट? तो मतलब कॉन्फिडेंस रहना हमेशा आपको। ठीक है। The third point is eye contact and body language. So eye contact, obviously, like that is the always a positive sign. Ki, like we have to just focus on like straight away into the camera itself, like I am doing right now, है ना? ऐसा like आप try कर सकते हो। And the posture of body, it should be like in straight fashion. And also like we can use like the hands are as well, we kind of like suppose if you are saying like this, so we can do like this, so that is a kind of एक फील देता है सामने वाले को कि सामने वाला पूरी तरह से इंगेज है वॉट एवर लाइक ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट? तो ये पॉजिटिव सेंस जाता है फॉर बोथ आई कांटेक्ट एज वेल एज पोस्चर, लाइक तो एक ये चीज कर लेना, बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, बेसिकली यू कैन थिंक। और चौथा पॉइंट होता है कि मैंने शायद आपको बताया कि हमें बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बोलना है, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना है। और कोई जरूरी नहीं होता कि एकदम से हमें बहुत ही जल्दी से बोल देना है सब कुछ, बीच में पॉज पॉज लेके बोलना, पॉज लेके जैसे मान लो उसने पूछा कि सपोज there are four peoples are working in your team, right? And out of four, you can say ki three are well and good, but like one person is struggling, right? So how you will basically manage like with that person, and you will how basically you will handle that situation. तो उस केस में लाइक यू कैन थिंक अप यू कैन से ओके, so what I can do, what I can do, I will just ask like from my race three engineers ki, since like you are like you are already or you have already done all kind of stuffs like or aware about the core part of the services that we are handling, but I think like the fourth fox who is basically like you can say ki, like he is in learning stage, so if he stucks anywhere, definitely I will always like set up one meeting and all these stuff. But I will ask like from the fox as well ki, like whenever you feel ki, like he stucks at some point, then you can like help him out, right? So, and also like give the context to him, like the proper, you can say like the document presentation, the deep dive into the services, so that like with the time he will get matured enough, he will get familiar with the technologies, familiar with the tech stacks, familiar with the code design flows, whatever like we are using in our system, and start implementing the things like in the fashion as like the rest of the folks are doing. I think these are the 3 to 4 points that we can do. Yeah, but I think these are more than enough to like better self like in the communication, I think. Yeah, that's it.